हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मोस्ट रिसेंटली आस्क्ड या लेटेस्ट कैबिन क्रू इंटरव्यू क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस के मैं आपके साथ सैम्पल आंसर्स भी डिस्कस करूंगी। सारे क्वेश्चंस के मैं आपके साथ सैम्पल आंसर्स डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी जिनके आंसर्स आप खुद बना सकते हो, खुद बोल सकते हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आंसर्स है। कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर्स मुझे लगता है कि ज़रूरी है डिस्कस करना आपके साथ, मैं वही आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूंगी टू सेव योर टाइम एंड टू सेव माय टाइम। और दूसरी चीज़, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि सैम्पल आंसर्स डिस्कस करने का मेरा एक ही मकसद होता है कि जब आप दूसरों के आंसर सुनते हो, मैं बहुत स्पॉन्टेनियसली जवाब देती हूँ, यानी कि मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ और मैं उस वे में जवाब देती हूँ कि मैं अगर इंटरव्यू में होती तो मैं कैसे जवाब देती। मैं इसमें कुछ पहले से प्रिपेयर नहीं करती हूँ। ये सारे आंसर्स मैं ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस ही देती हूँ, ठीक है। तो इंटरव्यू वाले दिन कोई भी सही जवाब या गलत जवाब नहीं होता है। इट इज़ अबाउट योर पर्सनैलिटी। बट जब आप दूसरों के आंसर्स सुनते हो तो यू विल गेट एन आइडिया कि आप अपने आंसर्स कैसे बेटर कर सकते हो, आप अपने आंसर्स में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो और क्या क्या पॉइंट्स आपको नहीं बोलने चाहिए, ठीक है। तो यही है मकसद मेरा, कुछ क्वेश्चंस के सैम्पल आंसर्स डिस्कस करने का। तीसरी चीज जो ये है कि मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है कैबिन क्रू इंटरव्यू के क्वेश्चंस विद सैम्पल आंसर्स के। उसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो कि रेगुलरली रिपीटेडली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो आप वो सारे क्वेश्चंस को जरूर देखिए, रेफर कीजिए, सुनिए दूसरों के वीडियो, सिर्फ मेरे ही नहीं, जिसमें भी ये सारे इंटरव्यूज के क्वेश्चंस बनाए हैं, सैम्पल आंसर्स बनाए हैं, उनके क्वेश्चंस एंड आंसर्स आप बार बार सुनिए, रिपीटेडली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि कौन से लाइंस में आपको आंसर्स देने चाहिए। एंड आई एम श्योर कि वेरी सून यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट इन योर इंटरव्यू, ठीक है। अब इसी बात पे चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना एंड वेलकम टू माय चैनल। Okay, so the first question is, what do you understand by cultural difference? Have you ever faced any trouble because of it? Okay, cultural difference according to me is anybody or people living under the same umbrella but having different cultures, different faiths, different religions, having different backgrounds. All this comes under cultural difference for me. Coming to the second part of the question, have you faced any trouble because of it? Honestly speaking, I have never faced any kind of trouble because I have been of a certain culture or vice versa, or somebody else practices a certain kind of culture around me. In fact, I have learned to become more flexible. I have become more adaptable towards different kind of cultures. I have also become culturally sensitive, culturally more aware of my surroundings because of so many people having so many different kind of cultures. And somewhere I think whenever you are surrounded by people of different cultures, different faiths, different religions, different backgrounds, different social backgrounds, that's what I'm trying to mean, you tend to learn more in life. You tend to learn something from every other culture or every other person's aspect of life. So that's all I would like to say in this. Next question is, what kind of movies do you like? Explain about the last movie you watched. Well, this is self-explanatory, but फिर भी अगर मैं इसका जवाब दूंगी तो my recently watched movie was 12th Fail, and something that I really took away from that movie and it motivated me somewhere was that it's never too late to dream. Dreams will come true if you work towards them. You may have some hurdles on the way, you may encounter some kind of delays on the way, but if you are dedicated, if you are motivated enough, you will get there eventually. So never stop working on your dreams, never give up. That's what I took away from that movie. Next question is, how traveling impacts people? Well, I think traveling impacts people in a very big way. Now, whenever you go out or whenever you plan to travel, you meet people from different cultures. You go and see their place. You understand how their lifestyle is, their food eating habits. You learn about a certain place. You learn about how people of that place function in their day-to-day life, basically. You understand weather conditions of that place. There are a lot of experiences that travel allows you to explore. And whenever these experiences happen, you will always have a takeaway. Now, your takeaway, which is in the form of experience, can be good or bad. But whatever it may be, at the end of it, the conclusion is that it will always widen your life's horizon. Next question is, why do you want to switch your role to a cabin crew and what do you know about Akasa Air?
सो ये क्वेश्चन किसी से आकाशा एयर के इंटरव्यू में पूछा गया था एंड मे बी दिस पर्सन हैज़ एक्सपीरियंस इन अनदर फील्ड एंड दे आर नाउ इंटरेस्टेड टू बिकम अ कैबिन क्रू. सो जब भी आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है यानी नॉट इन द एविएशन बट यू हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम समवेयर एल्स सम अदर फील्ड एंड यू आर अप्लाइंग एज अ फ्रेशर बट एज अ कैबिन क्रू, ठीक है, तो उस टाइम पे आप बोल सकते हो द डिफरेंसेस बिटवीन योर जॉब रोल्स. ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली कैबिन क्रू की जॉब रोल आपको क्यों पसंद होगी? मे बी बिकॉज यू लाइक ट्रैवलिंग, you would enjoy traveling and meeting new people. Your present job does not have that much options of travel. It does not have options of meeting people, socializing with people, interacting with guests. So that is one of the differences that you could point out. You can point out about you not having a monotonous job as a cabin crew. You will never have 2 days as the same days. So that's something that you are really passionate about and you're looking forward towards it. You can talk about being passionate about customer service. You can talk about having a face-to-face job role. So these are some of the things that you can talk about, all right? And Akasa Air के बारे में आप पढ़ सकते हो. अकासा, इंडिगो, विस्तारा, जिस भी एयरलाइन के इंटरव्यू में आप जा रहे हो हमेशा उनके बारे में कुछ पॉइंट ज़रूर पढ़ के फिर जाएं इंटरव्यू देने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर योर हॉबीज़. ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बट जब भी आप हॉबीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो डोंट जस्ट से इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट. मेक श्योर दैट वो सचमुच आपके हॉबीज़ हो बिकॉज वो आपको एलैबोरेट करके भी उसमें कुछ सवाल पूछ सकते हैं. ठीक है, डोंट जस्ट से समथिंग जस्ट बिकॉज आपको उसमें ऐसा दिखाना है कि you're fit for the job role. आप जो भी हॉबीज़ प्रैक्टिस करते हो या जो भी हॉबीज़ आपके हैं मेक श्योर कि आप वो एक्चुअली आपके वो हॉबीज़ हो. बिकॉज ऐसा हुआ है पास्ट में कुछ लोगों ने अपने CV में जस्ट टू लुक लाइक अ बिट मोर इंटेलेक्चुअल एंड एवरीथिंग लिखा है कि आई लाइक रीडिंग बुक्स. So the recruiter asked them which was the last book that you read and that person was zapped. वो books नहीं पढ़ते हैं, that is not their hobby. So don't say something which you do not do. Be honest, be truthful. If you like reading books, talk about reading books. If you don't read books, it's fine. Everybody has their hobby. ठीक है? Next question is what will you do on festivals if you don't get leave? Well, as much as I would love to spend that day with my family, I would also like to say that I understand that I have responsibilities towards my job and my commitment towards my job will always remain my top priority. And having said this, this would never even cross my mind if a day like this arrives wherein I have to work on a day of a celebration or on a festival. I choose working on that day hands down because I understand that not everybody can be a cabin crew, not everybody can have that kind of passion and zeal that I have for this job. Next question is, how do you manage your anger or stress issues? Well, generally in life, I'm quite a patient person. I'm quite peaceful at my thoughts. Generally, I do not get angered or stressed easily. But however, we are all humans and we do have some days when these emotions try to overpower us, and that's when we as humans are also designed to help control it, help manage it. So what works for me basically is that whenever I feel a little stressed, I feel a bit angered, I try to calm myself down first. I try to get to the root cause of my issue, what happened, what caused me, what caused this kind of emotion in me. And then if I can try, if it's physically possible for me to go take a walk out in the open, I do that. If it's physically not possible for me to go out, if I'm at work or if I'm at a place where I can't physically, go out of my surroundings, I try to take longer breaths. I calm myself down, I think over the root cause, and then of course everybody has to come out with a solution because there's nothing that lasts forever. Even my situation, anybody's situation for that matter, has to have a solution. So when I take a deep breath for some time, I calm myself down, or once I'm done going out for a walk and getting back home, I then think of what all things or counteractive measures that can be taken to solve these issues. So these are some of the things that I do to manage my stress and anger. Next question is, how will you spend your first salary? ये self explanatory question है. आप जो भी आपने सोचा होगा अपने first salary के साथ करने के लिए, you can talk about it. Next question is, what do you do in your free time? Again, this is similar to what are your hobbies. जो मैंने hobbies के लिए आपको बोला था कि make sure कि आपके वो hobbies असली में हो. तो even in your free time, whatever you do in your free time, make sure कि आप
वो सारी चीज़ें ही बोले। एंड अगर आप कोई भी इंटेलेक्ट वाली चीज़ें बोलते हैं कि यू प्लान टू डू दीज कोर्सेज और यू आर डूइंग दीज काइंड ऑफ कोर्सेज और वट एवर ऑनलाइन कोर्सेज और वट एवर स्टफ, देन स्पेसिफाई दोज थिंग्स। बिकॉज अगर आप वो सारी चीज़ें नहीं करते हो, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर आपने कुछ काम नहीं किया है या आप नहीं करते हो, एवरीबडी हैज़ देयर ओन वेज ऑफ डीलिंग विथ लाइफ, राइट? नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, बट डोंट लाई, बिकॉज अगर वो आपसे कुछ एलैबोरेट करके उसी चीज़ पर पूछते हैं तो आपके पास जवाब नहीं होगा, ठीक है? सो डोंट लाई, यू टेल देम व्हाट यू डू जनरली इन योर लाइफ, okay? If you help your mother to cook every evening, if that is what you do when you're free, tell them that. Maybe because you're passionate about cooking, you like to, give a hand to your mother. So ऐसा सब आप बोल सकते हो. There is no harm in saying these things, ठीक है? Next question is, which place did you visit last year? Share your experience. ये again self explanatory है. आप अगर कोई भी जगह पे आप गए हो घूमने के लिए, even if it is not outside, like not to another city, even if it is just in your city, अगर आप बाहर कहीं नहीं गए हो, तो specify about that place. How was your experience? What did you learn? You had a good day, you had a bad day, were you very tired that day? What all did you do? How many people went? Did you go with your family? Did you go with your friends? Talk about these things. Just basically वो आपसे 30, 40, 50 सेकेंड से ज़्यादा आपसे वो बात नहीं करने वाले, बिकॉज इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं. तो थिंक अबाउट सम प्लेस. आप मेंटली अभी प्रिपेयर करके रखो कि आप कौन सी जगह के बारे में बात करोगे अगर आपसे पूछा जाएगा तो. बिकॉज उस टाइम पे अगर आप सोचोगे तो आपके 30, 40, 50 सेकेंड तो सोचने में ही चले जाएंगे. तो ऑल दीज क्वेश्चंस इसीलिए ही आपके साथ डिस्कस करे जा रहे हैं, ताकि आप ऑलरेडी सोच कर जाओ कि अगर ऐसे सब क्वेश्चंस पूछे गए तो आप क्या जवाब दे सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट चैलेंजेस डू वी फेस व्हेन वी लिव अवे फ्रॉम होम? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली इंडिगो में पूछा गया था फ्रॉम दोज कैंडिडेट्स जो छोटे छोटे अलग अलग सिटीज़ में इंटरव्यू कंडक्ट किए गए थे और वहाँ पर इंडिगो का बेस नहीं है. उन सिटीज़ के कैंडिडेट से ही ज़्यादातर ये पूछा गया था कि व्हाट चैलेंजेस डू वी फेस व्हेन वी मूव टू अ बिग सिटी. क्योंकि ऑब्वियसली वो सारे कैंडिडेट्स वहाँ इंटरव्यू ज़रूर दे रहे थे, बट उनका बेस वो नहीं होने वाला है, ठीक है, अगर वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं. सो द रिक्रूटर वांट्स टू नो कि क्या आप अवेयर हैं इन चीज़ों के लिए. डू नॉट से दैट यू आर स्केर्ड. Always show the positive side of everything. Of course, there are challenges that occur when you move to a different city. जब आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो तो you are quite dependent on them. You have the safety and security of your parents always with you. So when you move to a different city, you learn to experience all these things by yourself. You become independent. These are the pros that you will learn when you move to a new city. You will learn how your friends will become family when you are away from home. You will understand basically how life happens when you move away from home, when you move to a bigger city. So these are some of the things challenges that you face. You experience your transition of being a child to suddenly growing up and being a mature person when you move away from home. You will do everything by yourself, right? From renting an apartment to going for a full-time job, to coming back home and cooking, to preparing everything for yourself, by yourself and for yourself. So these are some of the challenges that will come your way, but there also are a lot of learnings that come along with it. And you are somebody who is up for the challenge. You are somebody who's looking forward to building their self up, and that's why you are looking forward to this opportunity as well. Next question is, how will you maintain work-life balance? I understand that work-life balance is very important and one must have a certain kind of balance between their personal life and professional life. And somewhere I have kind of some thoughts in my mind towards it. The things that I would do would be, first, prioritize my tasks in order of its priority and list them down. And probably we have to also understand that being flexible and adaptable to different situations, different tasks is very important. There could be some tasks which would not be listed, which could come out of order, which have to be resolved then and there. And showing some flexibility towards these situations, showing some adaptability towards different scenarios in life is something that will make me achieve my work-life balance, is what I understand. And having said all these things, I also understand that self-care should be everybody's top priority. And if you achieve
self care satisfaction in your life, somewhere work life balance happens very easily. आज के इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपने भी कोई भी इंटरव्यू रिसेंटली दिया है, आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं. ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्प होगा जिन लोगों ने अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया है या प्रिपेयर कर रहे हैं. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर का कोई भी सैम्पल आंसर में कुछ भी असिस्टेंस चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आई विल मेक श्योर टू मेक माई नेक्स्ट वीडियो विथ योर क्वेश्चन एज वेल. Thank you very much for your time. Stay tuned for more.